Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical days of if you see yesterday's trading session, Nifty moved over 19,800 levels, but in the post first hour, or we can say in the second hour, index witnessed a selling pressure from the highs due to the Middle East concern prices rising again after bombing at Israel, at Gaza. So if we see that the index has breached the 19,700 levels and we were down by 140 odd points. So if we see, but on the daily chart, if we see index formed a strong red negative candle, but we are still in this narrow range of 200 odd points, which is from 19,850 to 19,650 odd zones. So for index 19,600 to 19,550 would be a crucial level. If those are being reached, then we could be heading lower towards 19,333, which is the first base, and then of course that we could be hitting towards 19,000 to 19,100. So bias for the day would be negative for the index, and if you're seeing also the GIFT Nifty is showing a 100 points gap down, so we will be testing 19,550. We have to see that if index manages to hold those levels, so that could be in buying opportunity, or otherwise they should be waiting for the furthermore downside. Secondly, for the Bank Nifty, see Bank Nifty also witnessed a selling pressure and index was down by 520 odd points and we have reached 44,000 and we are close to 43,800 zones. 43,800, 43,700 is a crucial zone for the index. If those are being taken out, and we could see a sharp down move toward 43,500, 43,000 to 42,500 zones. Yesterday on the advanced decline ratio front, if you see all the stocks were trading in the red, the major laggards were the private bank like HDFC, ICICI and Axis Bank, and these were taking the Bank Nifty down lower. Now coming to the derivatives front, if we see there was a minor long unwinding in the Nifty futures and the OI increased to 0.04 million contracts. And the PCR also decreased from 1.08 to 0.82 levels. And if you see OI data also, call build-ups were seen at 19,800, while the put side we could see a support at 19,600 zone. And on the Bank Nifty futures also witnessed a short built up to a tune of 32%, and while the OI increased by 0.7 when in contracts, the PCR also declined from 0.75 to 0.74. And on the option front, if we see there is a good built up at 44,500 on the call front, and on the put side, if we see 44,000 is still showing some writing on those. Then, but if we today, if we for the first of it trade below those, and then we could see massive short covering, long unwinding in the call side, put side, and we could be heading towards 43,500. Now coming to the FIS stats, if we see FIF are adding long position by 6,500 contracts, so they are net long by 72,000 and the ratio stands at 29 odd percentage. Similarly, in the cash market, they were sellers by 1830 odd crores, by DIs were buyer by 1460 odd crores. And on the stock specific front, if we see long build-ups were witnessing Sapla, Maruti and City Union Bank, and shorts were witnessing LTT as ABB and Syngene. Stocks which are looking good and can be kept on radar are Dr. Reddy, Green Panel, and Tata Elxsi. These stocks are looking good on short, so that should be kept on radar. So overall, that's it from mine. I'll hand over to Archana ma'am for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Coforge. The company reported 2.3% QQ growth and EBITDA margin of 17.6%, up by 160 bps. However, the company's results were below expectation and will have to have strong H2 to achieve top-end guidance of 13 to 16%. The 12-month order book is up by 16.6% YOY, which is one solace. We would be reviewing the numbers post-con call and will come out a detailed report. We have a hold rating on the stock with a target price of 4650. The next is on Wipro. The Wipro reported subdued Q2 FY24, and that was, on expected lines due to the macro uncertainty. Going forward, the company has guided minus 3.5 to minus 1.5% degrowth, indicating slowdown in the revenue to continue. Further, despite order book of 3.8 billion, book-to-bill of 1.4x, the conversion to revenue is not panning out. This is mainly led by the caution among clients, project ramp downs, and the slowdown in the discretionary spend. As a result, we maintain our hold rating on the stock with a revised target price of 390. On LTIMindtree, the company reported strong Q2 FY24 numbers, mainly led by the ramp-up of deal wins and the broad-based growth. Going forward, the company expects H2 FY24 to be better than H1. While the company continues to win robust deals, the book-to-bill ratio has tapered from 1.3x in Q1 FY24 to 1.2x in Q2 FY24. In addition, we believe that the higher than expected furlough in high-tech and banking, slowdown in the discretionary spend, and the macro issues could
impact the revenue growth potential. Hence, we maintain our hold rating on the stock with a target price of 4910. On Astral, the company reported neutral kind of numbers. The revenue came in at 13.6 billion, which was up by almost 16% YY and up by 6.2% QOQ. EBITDA was at 2.2 billion, strong growth of 53% YY and 9% QOQ, while the margins came in at 19.1%, up by 386 bips on YY basis, while 44 bips on QOQ basis. The company reported PAT of 1.3 billion, which is up by 96% on same quarter last year. The call is scheduled today at 4 p.m., post which will come out a detailed note. Currently, we have hold rating on the stock with a target price of 2109. Next is on Bajaj Auto. The company has reported standalone profit at 1,840 crores for this quarter, which is a growth of 20% on same quarter last year, with better than expected operating numbers. Standalone revenue from the operation increased by 5.6% YY to 10,780 crores, supported by the double-digit volume growth with the sustained buoyancy on the domestic front, cushioning the weak, albeit improving export performance. The sales volume dropped by 8.7% YOY to 10.5 lakh units during the quarter. The quarterly EBITDA surpassed the 2,000 crore milestone for the first time, growing 21% YOY at 2,140 crores. So numbers looks kind of, better than expected on Bajaj Auto front. And lastly, on IndusInd Bank, the private sector lender has reported standalone profit at 2,181 crores for this quarter, which is a growth of 22% on same quarter last year basis, with a fall in provisions and the stable asset quality. Net interest income grew by almost 18% YOY to 5,076 crore during the quarter, while the net interest margin has remained flat at 4.29% on QOQ, but grew 5% on YY basis. We have buy rating on the stock with a target price of 1675. So that's it from my side. Now hand it over to Shantanu for further research updates. Thank you, and over to you, Shantanu. Yeah, thank you, ma'am, and good morning, everyone. So we'll start with some further updates. First update is on Reliance Industries, where HSBC Holdings has nearly doubled the size of a loan arrangement to part of the Indian billionaire Mukesh Ambani's led company. The London-based bank originally provided a $73 million loan facility to a subsidiary of RIL. Shortly after it acquired the Stoke Park estate in southeast England in 2021. Speaking of ICICI Lombard General Insurance, the quarter 2 FY24 net profit was down by 2.3% at rupees 577.25 crores compared to rupees 590.53 crores in quarter 2 of FY23. The dip was attributed to a rise in the overall expenses of the company, which offset robust growth in gross direct premium income. Next numbers were of Bandhan Bank. The company reported over a threefold jump in the net profit to rupees 721 crores for the second quarter of FY24. The total income increased by 18.4% year on year to rupees 5,032 crores. Speaking of the loan portfolio of the company, the Kolkata headquartered bank rose by 12.3% on a year-on-year basis to rupees 1.08 lakh crores. The next update is on Dabur, where the company's three foreign subsidiaries, namely Namaste Laboratories LLC, Dermoviva Skin Essentials International Company, and Dabur International Limited, are facing cases in the federal and state courts in the US and Canada, which should act as a negative update for the stock of Dabur going into today. The next update is on IIFL Finance, where the company posted a 32% year-on-year growth in its consolidated net profit to rupees 526 crores. NII increased by 38% on a year-on-year basis to rupees 1001 crores. Speaking of UTI AMC, the company's net profit declined by 8% year-on-year to rupees 183 crores. Total income was down by 7% at rupees 404 crores. Next update is on Bank of Baroda, where after facing a regulatory wrath for alleged attempts to inflate
Registrations for mobile application BOB World. The bank has begun action which included suspension of employees charged for tampering with the customer data. Next update is on Power Grid Corporation, where the Cabinet Committee on Economic Affairs has given its approval for the viability gap funding to the state-owned firm for the construction of Green Energy Corridor 2 in Ladakh region at an estimated cost of rupees 20,773.70 crores. Speaking of RPG Life, the results of the company were out. Net profit was up by 29.5% at rupees 25.9 crores versus rupees 20 crores. Revenue too was up by 13.9%. So overall, the results of the company were quite positive. Lemon Tree Hotels, the company has signed license pact for a 72-room hotel in Badrinath, which should act as a positive update for Lemon Tree going into today. Speaking of Bajaj Healthcare, the company commissions alkaloid extraction plant at Vadodara, Gujarat unit, and it is certainly a positive thing for the stock. Next update is on alkyl amines. The company starts commercial production at its newly set up plant at the existing Kurkum site in Maharashtra. Speaking of Bharti Airtel, the company sees rupees 8,000 crore market opportunity with the cloud platform launch. It should be a positive update for Bharti Airtel. The next update is on ONGC, where Moody's has affirmed ONGC's Baa3 local and foreign currency issuer ratings. It cites strong business profile, significant oil and gas reserves as well. REC, the company has signed an agreement with Bank of India to co-finance rupees 30,000 crores worth projects, which is a positive thing for the company. Speaking of HUDCO, government is supposed to exercise oversubscription option in HUDCO OFS. The next update is on Crompton Greaves, where the company has appointed Mr. D. Sundaram as the chairman. Final update is on Trident, where the entire IT assets of all the senior officials under control of Income Tax Department for scrutiny. Overall, it is a quite negative update for Trident. So that was all from my side. I'll now hand it over to Kshitija ma'am for further updates. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है कोफोर्ज के ऊपर। कोफोर्ज ने रिपोर्ट किया 2.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। इबिटा मार्जिन है वो 17.6% से अप है 160 बेसिस पॉइंट से। कंपनी का रिजल्ट जो था वो बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। स्ट्रॉन्ग है उनका H2 जो अचीव करेगा टॉप एंड गाइडेंस 13 to 16%। कोफोर्ज का जो 12 मंथ का ऑर्डर बुक है वो अप है 16.6% ईयर ऑन ईयर which one is सोलेस। एंड रिव्यूइंग नंबर पोस्ट कॉन कॉल हम लोग अपडेट करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। स्टॉक की जो टारगेट प्राइस है वो 4,650 है। देन विप्रो के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स सबड्यू आए थे। देन आगे जाके हम लोग कंपनी ने गाइड किया -3.5% से लेके -1.5 की डी ग्रोथ, जो इंडिकेट करती है स्लो डाउन इन रेवेन्यू में। और डिस्पाइट ऑफ ऑर्डर बुक 3.8 बिलियन, कन्वर्जन जो रेवेन्यू का है इज नॉट पैनिंग आउट। मेनली इनका जो ये है वो कॉशन अमंग क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट रैम्प डाउन, स्लो डाउन इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड में उसके कारण है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है, रिवाइज टारगेट प्राइस है 390। LTMIT के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 के। ये बेसिकली रैंप अप ऑफ डील विंस के कारण और जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ कारण था उसके कारण आगे जाके कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 एस्टिमेटेड बेटर देन होगा फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 24। कंपनी कंटिन्यू बीन करती आ रही है रोबस्ट डील्स। उनका जो बुक टू बिल रेशियो है वो टेपर्ड हुआ है फ्रॉम 1.3x in Q1 financial year 24 to 1.2x in Q2 financial year 24। हम लोग
बिलीव करते हैं कि हायर देन एक्सपेक्टेड फॉलोअप्स हाईटेक बैंकिंग स्लो डाउन डिस्क्रिशनरी स्पेंड होगा और माइक्रो इशू से कुछ इम्पैक्ट करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। रिवाइज टारगेट प्राइस है 4910। एस्ट्रल के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 13.6 बिलियन, जो 16.3% से ईयर ऑन ईयर हायर है और 6.2% से हायर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पॉइंट पे। EBITDA जो है वो 2.2 बिलियन रिपोर्ट किया है, ईयर ऑन ईयर 52.8% हायर है और 9.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर हायर है। EBITDA जो मार्जिन है वो 16.1 है, 386 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर हायर है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1.3 बिलियन, 96% से हायर है ईयर ऑन ईयर एंड 7.8% से हायर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉन कॉल आज शेड्यूल है, उसके बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। स्टॉक की जो टारगेट प्राइस है वो 2109। बजाज ऑटो के ऊपर अपडेट है, जो पुणे बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है स्टैंड अलोन प्रॉफिट 1836.1 करोड़, देन ग्रोइंग 20% ईयर अगो पीरियड में था और बेटर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग नंबर्स है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है 5.6% ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 10,777.3 करोड़। बेसिकली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इसको सपोर्ट किया और सस्टेन बुयांसी डोमेस्टिक फ्रंट कुशनिंग वीक था और कंपनी इंप्रूव कर रही है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है 8.7% ईयर ऑन ईयर, जो 10.5 लाख यूनिट्स ये क्वार्टर में हुआ था। क्वार्टरली जो EBITDA है वो सरपास हुआ है 2000 करोड़ माइलस्टोन फर्स्ट टाइम, ग्रोइंग 21% ईयर ऑन ईयर, जो रिपोर्ट किया है 2133 करोड़। मार्जिन एक्सपेंशन 260 बेसिस पॉइंट का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.8%। एंड ओवरऑल कंपनी ने स्टेट बोर्ड है उन्होंने अडॉप्ट किया है कि रिवाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इंडसइंड बैंक के ऊपर अपडेट है। इंडसइंड बैंक ने रिपोर्ट किया है स्टैंडअलोन प्रॉफिट 2181.5 करोड़ का, जो ग्रोइंग हो रहा है 22.09% पे ईयर ऑन ईयर। उनका जो प्रोविजनल था वो फॉल हुआ है, स्टेबल एसेट क्वालिटी है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है 18% से ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 5076.7 करोड़ ये सेम पीरियड में और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो फ्लैट है 4.29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट 5 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। टारगेट प्राइस जो है 1675 लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है। देन नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। HSBC होल्डिंग है, उन्होंने डबल साइज किया लोन अग्रीमेंट पार्ट ऑफ मुकेश अंबानी का जो बिजनेस एम्पायर है उसमें। लंदन बेस्ड बैंक ओरिजिनली प्रोवाइड किया है $73 मिलियन लोन फैसिलिटी सब्सिडरी रिलायंस को शॉर्टली आफ्टर अक्वायर्ड स्टोक पार्क एस्टेट साउथ ईस्ट इंग्लैंड इन 2021। देन नेक्स्ट अपडेट है ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के नंबर्स आए थे। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है जो कि डाउन है 2.3% से 577.25 करोड़। एंड उनका जो डिप है वो एट्रीब्यूट हुआ है राइज इन ओवरऑल एक्सपेंस में, जो ऑफसेट रिबूस्ट ग्रोथ है ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में। देन बंधन बैंक के भी नंबर्स आए थे। रिपोर्ट किया है 3-fold जंप इन नेट प्रॉफिट 721 करोड़ क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24। टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है 84.4% से ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने रिपोर्ट किया है टोटल इनकम 5032 करोड़। लोन पोर्टफोलियो है कोलकाता का हेडक्वार्टर का बैंक का, वो राइज हुआ है 12.3% से ईयर ऑन ईयर और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1.08 लाख करोड़। डाबर जो कंपनी है वो 3 फॉरेन सब्सिडरीज नेमली नमस्ते लैबोरेटरीज LLC, डर्मुविया स्किन एसेंशियल इंक, डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड, जो फेस कर रहे केस फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स में कनाडा और USA में। IIFL फाइनेंस से 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 526 करोड़ रिपोर्ट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ है 38% से ईयर ऑन ईयर 1001 करोड़ रिपोर्ट किया है। UTI AMC के भी नंबर्स आते हैं। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 8% से ईयर ऑन ईयर 183 करोड़ है।
टोटल इनकम डाउन है 7% से 404 करोड़। देन नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। जो रेगुलेटरी वॉच है उन्होंने अलाइव किया है अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लेट रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप्लीकेशन बीओबी वर्ड का, और बैंक ने बिगिन किया ऑक्शन जो इंक्लूडेड है सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज चार्ज फॉर टेम्परिंग विद कस्टमर डेटा। देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ऊपर अपडेट है। कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA उन्होंने अप्रूवल दिया है वियाबिलिटी गैप फंडिंग जो स्टेट ओन फर्म से कंस्ट्रक्शन जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 लद्दाख रीजन में करेंगे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 20,773.70 करोड़। लेमन ट्री के ऊपर अपडेट है। कंपनी ने साइन किया लाइसेंस पैक 72 रूम होटल्स बद्रीनाथ में। देन बजाज हेल्थ केयर के ऊपर अपडेट है। कंपनी को कमीशन मिला अल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन प्लांट वडोदरा में गुजरात यूनिट में। देन अल्कलाई अमाइंस कंपनी स्टार्ट करी है उनका कमर्शियल प्रोडक्शन न्यूली सेटअप प्लांट एग्जिस्टिंग कुरुकुंबा साइट पे महाराष्ट्र में। देन भारतीय एयरटेल के ऊपर अपडेट है। कंपनी सीज करी है 8,000 करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी विद CCAS क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च। देन ONGC है वो ऑफर्स करी ONGC's BAA3 local and foreign currency issue rating। सिटीज से स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल है और सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस रिजर्व है। देन नेक्स्ट अपडेट है REC के ऊपर। कंपनी ने साइन किया है अग्रीमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो फाइनेंस करेंगी 30,000 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट। देन हुडको जो कंपनी है उनको गवर्नमेंट ने एक्साइज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन हुडको FS के लिए एक्साइज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। देन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी है उन्होंने अपॉइंट किया D सुंदरम उनको चेयरमैन। ट्राइडेंट जो एंटायर IT असेट्स और सीनियर ऑफिशियल है वो अंडर कंट्रोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी के यहाँ पे है, तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत निगेटिव और इम्पैक्ट हो सकता है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.